Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed and we have started actually the plant kingdom system. Okay, in plant kingdom the first of all was thallophytes, in which algae are considered, right? And then bryophyte, pteridophytes, gymnosperm, and finally we will discuss angiosperms. So we have classified the algae according to their structures and according to their chlorophyll content. Now we have brown algae here. A leaf-like photosynthetic organ, and a stipe that functions as a stalk. The frond. See, algae are the pouches. Algae are known as the plants like pouches, having no properly differentiation between what is, whether it is leaf, whether it is stem, whether it is root. You cannot differentiate anymore, right now. So we are going to discuss how these plant bodies are actually, right? So they have structures like frond, stipe, and Stipe are attached to the substratum by a holdfast. holdfast, the root. You can consider it as root. The vegetative cells of brown algae have a cellulosic wall, which usually has an outer gelatinous coating of algin. The protoplast inside the cell has plastids and a centrally located vacuole and nucleus. Brown algae produce through fragmentation and asexually through biflagellate spores. Like, On the other hand, in sexual reproduction, the gametes unite either in water or within the oogonium. note the points. Rhodophyceae is another class of algae whose members include. See, we have discussed chlorophyceae and phaeophyceae. Chlorophyceae are the green algae, phaeophyceae are the brown algae, right? Brown, these were green, and now we are going to discuss red algae. Rhodo stands for red algae. Okay, now what are red algae? Polysyphonia, Gracilaria, and Gelidium. Note the points. These are the example: Polysyphonia, Gracilaria, and Gelidium, or Gelidium you can say. The members are often called red algae. Red algae, these are all. The red color is due to a high concentration of the red pigment R. phycoerythrin. Note the point. Red algae because of the pigment R. phycoerythrin. What is R. phycoerythrin? Now look at the name. Phyco stands for algae. Erythrin, whether we say erythro, that means red, like erythrocytes, red blood cells, right? So you can recall the name by pronouncing phycoerythrin, red algae. Okay, erythrin. The thalli of red algae are multicellular, Note it. and food is stored as Floridian starch inside the cells. Very important question. Floridian starch is found in which of the following algae? I will give the example and you can say you know the answer, that is red algae. So red algae contains Floridian starch. Okay, now make the points. Floridian starch is found in red algae. Red algae are found in brackish and salt water, and mostly in warmer areas. गर्म एरिया में मिलते हैं. Red algae reproduce vegetatively, asexually through non-motile spores, and sexually through motile spores. Very interesting. Note the point. Thus we have seen that there are a variety of algae that thrive in the aquatic habitat. It is common to see a green cover growing over rocks, bricks and walls after heavy showers. This green cover is nothing but moss, which is a type of bryophyte. Bryophytes are plants that usually grow in damp, humid and shaded localities. They are also called amphibians of the plant kingdom because though bryophytes grow in soil, they need a moist habitat for sexual reproduction. Let's now take a look at the different parts of a bryophyte.
The plant body is thallus-like. Now, whenever we study algae, always we call it thallus, the pouch. प्लांट बॉडी एल्गी की ऐसी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लीव्स कहाँ हैं, स्टेम कहाँ है और रूट्स कहाँ हैं. जनरली हम प्लांट को कैसे बोलते हैं? आप कोई प्लांट बोलोगे तो ट्री आपके दिमाग में आता है. हाँ, प्लांट मीन्स ट्री, तुरंत एक दिमाग में पेड़ आता है. हाँ, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बरगद ट्री, बैनियन ट्री, एनीथिंग. ओके, लेकिन जब एल्गी की बात करते हैं, एल्गी भी प्लांट है, बट वहाँ पे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कहाँ पर रूट है, कहाँ पर स्टेम है, कहाँ पर लीफ है. ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? थैलस बॉडी. ये पूरा का पूरा एक पाउच जैसा दिख रहा है आपको, एक तरह का पाउच है, बस केवल पाउच. राइट? क्लियरली कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर. अब आगे देखें कि कैसे इसको हम डिफाइन करें. And is either prostrate or erect. It is attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. Not the point. The We are not taking the term roots. We are not taking the term roots. We are calling it rhizoids. Root-like structures, not the exactly roots. What are you calling it? Root-like structures. अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं बेसिकली ब्रायोफाइट्स की. एल्गी में जहाँ पर क्या था, एल्गी में कहाँ था, एल्गी में था केवल पाउच जैसी बॉडी. थोड़ा सा एल्गी से डेवलप हुए, मतलब एल्गी नाउ इज एवॉल्विंग. प्लांट्स का एवोल्यूशन होता है तो पहले एल्गी पढ़ते हैं, देन ब्रायोफाइट्स की बात आती है. ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा, बट एग्जैक्टली वो होगा नहीं. राइट? क्लियर है? रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक, नॉट द एग्जैक्टली वन. plant body does not have true roots, stem or leaves, but possesses similar structures. Note the point. The main plant body of a bryophyte is haploid. Note it, the very important one. The main plant body कैसी है? हैप्लॉइड. इसका बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे भी इसके बारे में. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या है? ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. ध्यान देंगे, टेडोफाइट्स में प्लांट बॉडी क्या बोलेंगे? वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी. It is also called a gametophyte as it produces gametes. Note it. The plant body has both male and female gametophytes, which bear the male and female sex organs respectively. The male sex organs are called the antheridia, and they produce biflagellate antherozoids. The female sex organs, called the archegonia, are flask-shaped and each produces a single egg. During fertilization, the antheridium releases antherozoids in water where they come into contact with the mouth of the archegonium. One antherozoid fuses with the egg to form a zygote. आपने देखा, एक छोटा सा एंथीरोजॉइड इस पोर्शन से निकल कर आया है और आर्किगोनियम में जाके अटैच कर जाता है. फिर से इस प्रॉपर्ली एनिमेशन को देखेंगे, पॉज करेंगे, वापस करके देखो देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अंदर जाइगोट बनेगा. देन The zygote in turn produces a multicellular body called the sporophyte. स्पोरोफाइट. The sporophyte जाइगोट बनने के बाद क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट. मल्टीसेलुलर बॉडी क्या कहलाएंगे? स्पोरोफाइट. बहुत अच्छा है, यहाँ पे पॉइंट समझेंगे अच्छे से. it gets its nutrition from the gametophyte. Note it. Some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. Note These spores germinate to produce a gametophyte. आपने एक पॉइंट देखा, आपने कहा ये मान लो गैमेटोफाइट है. राइट? गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड कंटेंट, मतलब कि इसके पास आधे क्रोमोजोम है. क्या है? हाफ क्रोमोजोम. राइट? ये बॉडी है, बॉडी हैप्लॉइड है. बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हमारे जैसे हम ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी हैप्लॉइड है. राइट? लेकिन जब हमारे गैमीट्स निकलेंगे यानी कि स्पर्म और ओवा निकलेगा तो क्या होगा? वो हैप्लॉइड होगा. याद रखें, ब्रायोफाइट्स में क्या है? इनकी बॉडी ही हैप्लॉइड है. और जब ये दो हैप्लॉइड कंटेंट यानी कि एंथीरोजॉइड और एंथीरोगोनियम ये मिलते हैं आर्किगोनियम, तो क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट, यानी वो डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है थोड़ी देर के लिए. तो याद रखें, गैमेटोफाइट स्टेज ज़्यादा देर के लिए बनती है ब्रायोफाइट्स में और स्पोरोफाइट स्टेज कम टाइम के लिए बनती है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन हो रहा है. फिर से देखें इसे. Bryophytes are of two types, liverworts and mosses. नोट.
You can find liverworts in moist and shady environs such as barks of trees. The plant body, a thallus, is dorsiventral and oppressed to the substrate. However, in the case of leafy liverworts, the plant body bears tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. Liverwort. See, we are taking the term stem-like, leaf-like structures, not the exactly leaf or not the exact stem. याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स में प्रॉपरली ना तो लीफ बने हैं, ना तो प्रॉपरली स्टेम बने हैं, ना तो प्रॉपरली रूट्स डेवलप हुए हैं. उन्हें हम बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला? राइजोइड्स. Reproduce both asexually and sexually. In the case of asexual reproduction, we observe fragmentation of the thallus. Asexual reproduction also occurs when gemmae are formed. Gemmae. They are green, multicellular, asexual buds that separate from the parent and develop into new individuals. Very important. छोटे छोटे बड्स बने होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया? जेमी. राइट, जेमी आपको दिख रहा है यहाँ पर. ये छोटा सा बड बाहर फिर से डेवलप कर जाएगा बाहर की तरफ से, तो क्या बोल देगा? एक पूरी पूरी बॉडी बना देगा. तो क्या बोल दिया इसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल टर्म तभी लेते हैं जब जहाँ पर मेल और फीमेल की बात ना करें. राइट, खुद ही मेल है, खुद ही फीमेल है. यानी कि यूनिवर्सल जो, याद रखेंगे, यूनिवर्सल जो जेंडर होता है हमेशा फीमेल माना जाता है. मेल चांस की बात होता है. They develop in small receptacles called Gemmae cups located on the thallus. In the case of sexual reproduction, the male and female sex organs are produced either on the same or on different thallus. Noted. Mosses are another type of bryophytes. Funaria, Polytrichum, and Sphagnum are some common species of moss. A moss undergoes several stages in life, wherein the gametophyte stage is the most predominant one. The gametophyte stage has 2 substages, protonema and leafy stage. Note the points.